we are heading towards people losing out more on text, more on, say, books, novels, and Yeah. more towards online. I know one gentleman in Pune who had a beautiful bookshop. He had to shut it down because Naturally. people are losing the habit of reading books. I have my relatives who are studying for UPSC out of YouTube now. I Are you heard, familiar with the Google AI, yeah, yeah, Gemini? yeah, Are yeah. you familiar with the fact that you can ask your Google AI to book you in a salon appointment? Oh, ये नहीं पता Yeah, था. they've done that. Take it एक up छोटा सा seriously. प्रैक्टिस है. आप Yeah, नया yeah. न्यूबॉर्न है ना, न्यूबॉर्न के सामने आप लगे रहिए फोन पे, वो भी वही करेगा. वही करेगा. कॉपीकैट मार्केटिंग, मैं Yeah, वही बोल yeah, रहा yeah. हूँ. They imitate what parents do. Namaskar. Welcome to the Meeting Point podcast. I'm Sarika, founder and host of this podcast and also yoga teacher by profession. Now, today's podcast is a little hatke. Okay. I have thoroughly enjoyed interacting with Professor Ayush, who is a professor of digital marketing. Okay. And we are going to be talking about some issues which we all have questions about social media. Okay. The good, the bad, the ugly part of social media, stuff that we learn, stuff that we really don't like about it, or for that matter, how do we create a balance uh, about using the social media or our exposure to social media, right from children to adults. Yeah. So Professor is going to throw some light on very interesting tidbits. His stories are fun to listen to. His perspective on this subject is very interesting for us. So, without spending much time, let's begin and let's roll and enjoy this podcast. And please remember to like and subscribe our channel. I know there are many viewers watching us, watching our podcasts, but not subscribing or leaving any comments. So, I would really request you to do that, please, to help us grow so that we can invite more and more interesting guests and we jointly learn from them. Okay, so let's begin the podcast. Hello, Professor Ayush. Welcome to the Meeting Point Thank you podcast. so much. Thank you so much. I was looking forward to this topic because this is a very intriguing topic and Kind a of is. hot topic, I think. It kind of is. Season Yeah, ka. because I think the world is barely able to realize the fact that yes, I'm having a time of my life getting a recharge done for like 300 rupees and then wasting a couple of GBs every single day, Yeah, yeah, and yeah. then having a good time watching all the reels and everything. Yeah. But what's the repercussions? What's the reaction like for the whole body True, and true. everything, and how you're being manipulated, how you're being controlled, how things are really Lot of, not as per yeah. your expectations. But yeah, Yeah. I really wanted to lay more stress on that. So Yeah. that's why. You coming from that field, you're a professor of digital marketing in one of the reputed colleges in Pune. So, from there, talking about digital well being or digital detox, how do you sort of balance that out? I'll not be able to do justice to the whole learning process if I am not able to strike a balance. Okay. Every single day, today's generation, thanks to the real culture, thanks to the mobile culture, thanks to the internet culture, and high speed internet. Okay. Because back in the day, we would struggle for the internet connection Yeah, first of yeah, all, yeah, yeah. and then struggle for the speed for the video to load up in a proper manner. Correct. So today everything is available Yeah. at a tap. So I tell them that think of it as a rare phenomena Okay. where you are struggling really hard to get that, and you keep on trying every single day to maintain that practice. Okay. Similarly speaking, they come up to me and say, "Oh, sir, bore हो गए, आज content नहीं डालेंगे, आज ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे." मैंने कहा, बेटा, if you're trying to work your way into a platform, and if you want to build up a good follower, if you want to build up a good traffic to your channel or to your platform, the consistency is the key, right? And you have to strike that balance. You have to get proper sleep. You have to Right. plan ahead. You have to make sure the content has good quality. Then once you capture that quality, make sure the post production is also at par. Yeah. Yeah. And then a little bit of marketing here and there. Let people know that, hey, there's this new content floating out. Make sure you go watch it. Thank you so much. See you in the next one. So to do all of that, you need to be sure. And that's why I tell them, okay, fine, even if you don't want to do it daily basis, I understand. Don't do it. Do it on a weekly basis, but at least plan ahead. Work backwards, Right. right? If you think
that people are, because I do my Instagram live almost. I've stopped it for quite some time because I've been occupied, of course. But I tend to do my Instagram live, like for example, I'm planning tonight. Tomorrow is going to be Saturday, so few of the people are going to be enjoying their extended hours midnight. So what are they going to do? How the projection is? Yes, exactly, On the phone. exactly. Moving their thumb. Exactly, moving the thumb, controlling the thumb, Yeah, right? yeah. Thumb se yaad aaya, there was this one mentor I was working with. I wanted to learn more about entrepreneurship, and this guy was really funny, very good guy. Saurabh, if he's watching it, he might know. You know what he said? कि अब तो ऐसा हो गया कि पहले लोग माला जपते थे, अब लोग फोन जप रहे हैं, Oh my and then God. उसी को पूजा कर रहे हैं. And you won't believe, he's not wrong. He's not wrong. Actually right. सही बोल रहा है, ये ऐसे ऐसे ही तो चल रहा है. And I सच believe में. someone on the higher end realized it. कि यार लोगों से preaching कैसे करवाएं अपनी? It's the God. It's the God. You have to make it too a much. God. हाँ, actually सही है example ना, है. सही एग्जांपल दिया वही मेरे कर को, रहा है. हंसी आ गई थी उस टाइम पे. So then how do we create a balance कि ठीक है भाई पोस्ट करना है, you have to be active on the social media to make noise about whatever you're doing, but at the same time how do we create a balance कि भाई you know people should not get addicted to it also, people who are watching it rather, and you're regularly posting also, so how do we So I tell my students, you have clocked your hours on in front of a screen. okay You've clocked it. At least if you've clocked like say 4 hours, at least 2 hours give good rest to your eyes. Take good breath. आधा ही तो मांगा है, मैं यही नहीं 4 का 8 कर दो, 8 घंटे तो नींद ही पूरी हो जाएगी. right And then they'll not realize one thing that is very essential. रात के 12 से लेकर 4 बजे के बीच में body recuperates itself. Okay. It's doing a repairing inside of all sorts. वो ये करते नहीं है, ये सोते ही हैं 4-5 बजे, है ना, ये thinking that I'm going to strike a balance. No wonder people who used to work in call centers are not living a healthy life today. correct Night shift yeah करके. yeah They're really, yeah they have their own health issues. they have humongous health issues. If we are in Pune, we can see it happening. Their cranky nature, their anxiety is crossing its bars like crazy, and they're looking at screen all single time. I have dark circles for the same reason. I've been fixing it since way longer time. But because I study geopolitics, I teach a sense of geopolitics. I've lost my sleep. I have a little bit of sanity is also taken a side step. With what is happening around the world. One is bombing the other, one is doing some strategy. I mean, the other day I learned about what the incident with the pager, what recently happened in Israel and Iran. Yeah, the blast. Yes, the I was like, damn, that's a great case study for defense sector. And very next day, the chief of army, he went up to the stage and he said the same thing, making shell companies, blowing up pagers, triangulating their movements. I mean, this is preparation to the core. This is like one of the finest examples we can ever see in defense sector. Yeah. So when I study about these, I tend to lose my sanity to the side, and I question that, okay, what is happening? And whoever is making this and doing all of this, how is that person having a sound sleep? Tell me that first of all. Right. And I want to learn from the greatest of all times, definitely. In fact, even after I've started podcasting, my screen time has increased because वो edit के लिए जाता है, फिर वो आता है, then you have to look at the, the recordings and stuff like that. So I'm realizing it myself, though I'm conscious about it. Okay, थोड़ा सा, you try to control that. But I'm just wondering, people who are constantly glued onto the monitors, what havoc it must be creating. Have you seen people's backs arches? Yeah. I'm into yoga, right? Yes, I'm sure. We get so many cases like that. I'm sure. Arey baap re. Stooping, back, knees, and they're comfortable everything. with it now. Yeah, they're really that's comfortable. become the natural position. That's become a natural position. So imagine 50 years down the line, what will the human body structure will look like now? Yeah. They never imagined that they can use this pinky finger to hold their phone like this and then do operate. They never imagined कि ये इतना काम आएगा. अब इतना हो गया कि आप देखो यहाँ पे बल जाना शुरू हो गया लोगों के. Okay. वेट बढ़ते जा रहा है, डिवाइसेस का वेट बढ़ते जा रहा है. Correct. They're holding on to their iPads. अभी उसी दिन नया iPhone launch हुआ है, by the way, 16. You must be aware. Yeah. Chinese did not stop themselves there. There's this company by the name called Huawei. They launched a 3-screen phone. A 3-screen phone. Okay. Yes. You open this phone like this, and जो आगे वाला screen है ना,
हाँ जो ऐसा आपको दिख रहा है, नॉर्मल फोन आपको ऐसे दिख रहा हाँ होगा, हाँ ठीक है, यू ओपन इट लाइक अ फोल्ड फोन, Right. और जो आगे वाला स्क्रीन है ना, दैट गोज लाइक दिस, सो इट बिकम्स अ Okay. 3 screen phone. Wow. Yes. Kids do not even want to buy a laptop anymore. I have an 11-year-old nephew. हाँ He doesn't have a laptop. He enjoys Mac. Cousin वजन आ जाते हैं, they're working with EY and whatnot companies, Deloitte and everything. They bring their Mac and they have Yeah. it's their job, it's their work system. वो वहाँ पे लेके शो ऑफ करना शुरू हो जाता है. Oh, it's a Mac. Oh, look at it, it's a Mac. It's a Mac. है ना? iPad है उसके पास. उसके पास प्रॉपर सिस्टम भी है. ऑनलाइन रोब्लॉक्स भी खेलता है. पूरा सब कुछ करता है. डिस्कॉर्ड भी करता है वो लड़का. उस दिन मैं उसके लिए हेडफोन्स लेके आया JBL का, जिसमें माइक इतना लंबा है. अभी कैमरा भी लगाएगा. YouTube चैनल भी खुल गया उसका. Imagine he's gonna turn 12. Wow. Yeah. आजकल के सभी बच्चों का they're very savvy with And because technology. it's a competition. Every other one is, ma'am, you will not believe, there's this drink, really famous drink by the name called Prime. Okay. You will not believe. It's gonna cost you around 1,000 rupees to 1,500 rupees. That Okay. small bottle. मतलब 40 रुपए का स्प्राइट का बोतल के साइज का है मैम वो. Okay. इज जस्ट नथिंग. एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है पॉल ब्रदर्स करके, उसमें एक भाई है पॉल, जेक पॉल या जो भी है, रोगन पॉल, उसने प्रमोट किया हुआ है, उसकी ड्रिंक है ये बच्चे उसी को पूरे दिन देखते रहते हैं, वो उसका मार्केट करते रहता है. और ये लड़का बोलता है मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए. मैंने इसकी मम्मी को फोन लगाया, अपनी सिस्टर को, मैंने कहा ये क्या है यार, ये क्या चल रहा है, ये मेरे को पता है ये क्या है, बिकॉज मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, बट ये क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है. कह रही है इसके दोस्त लोग पीते होते होंगे, तो ये दोस्तों को दिखाना चाह रहा है. Correct. मम्मी को पोड़ता कैसे है, मम्मी यू बाय मी दिस राइट नाउ, आई विल फिनिश इट इन 1 month. Okay. I was like, ये कहाँ से दिमाग लाता है ये सब यार. Yeah. So the exposure, I guess, right? The exposure that they have on the screen. And the same reason we need a digital detox. Mm-hmm. Push them more towards books, novels, and perhaps a good quality of content, at least. Okay. That's the least I can do for him. I can tell him that, hey, please do not watch this, or try to learn more quality out of the quality production. If I tell him watch, say, something with respect to this guy, I know, Danny Jones, he's a wonderful podcaster. Joe Rogan तो है ही है, उसको तो खैर बोलना ही नहीं है, बट हिंदी में भी वाद करके एक है. Okay. ठीक है, अमित है मेरे ख्याल से उनका नाम, वाद करके है, उसका देखो पॉडकास्ट. एटलीस्ट बेटा देश के बारे में तो जानो. अचानक से आएगा, बोलेगा टेल मी हु इन्वेडेड यूरोप इन दिस ईयर दैट ईयर. मैंने कहा इधर आ जरा, अशोका के बाप का नाम क्या था, चल ये बता मेरे को. एंड देन ही गो टू द रूम एंड ही विल डू गूगल एंड कम बिंदुसारा, एंड लाइक इतना क्यूट क्यों बन रहा है भाई, सीधा बोलना, नहीं पता तेरे को, है ना. प्लीज लर्न मोर टुवर्ड्स इट. This Western hegemony has created this bubble inside our head कि भैया इंग्लिश नहीं बोलोगे ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ पे, इंटेलिजेंस तो भूल जाओ. Correct. We have experienced this in our own family. Exactly. So, है ना? Yeah. तो वही इन बच्चों को समझा रहा था. अब वो अपना हिंदी पे काम ही नहीं कर रहा. He is far more comfortable with his English. YouTube चैनल में भी पूरा इंग्लिश ही कर रहा है. लेकिन मैंने उसको बोला कि बाइलिंगुअल रखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है ऑडियंस कैसे चाहिए. He's like, no mama, I'm far more comfortable with English. ठीक है, fine, do it. Which is unfortunate. Ranveer Elavadia did the same thing. He started off with the English. Zakir Khan came in the picture. He told him, "Bhai Hindi mein kar," and then audience shoot up. It's like a hockey stick growth for him. That's why I encourage my kids also for the same thing. I understand you're comfortable with English. You've always spoken in English all of your life, maybe. Right. ठीक है, but थोड़ा सा हिंदी भी लाओ बेटा. थोड़ा audience से connect build होगा अच्छे से आपका. Yeah. And it's your mother tongue. You should know it. If it's your mother tongue, फर्क नहीं पड़ता मैम. हिंदी हो या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो. बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मैम. They barely realize the fact that what is mother tongue, what is not a mother tongue. Okay. They think they are the natives in English now, so ठीक है. So, what all practices have you experienced which have worked for parents to probably बच्चों को थोड़ा दूर ले जाए? One thing I suggested my sister one fine day, I came across this small clip where I told her that, this Guruji is saying that you tend to snatch away their screen time, making it as a punishment. Okay. And making book time as a punishment, sorry. Okay. You are rewarding them with screen time. That's their reward. But when you say, hey, band to karo usko, pick up your book, where's your homework? Is that part of the process a punishment for him? Or should he take it as a duty and then the reward should be the screen time, right? Ulta. हाँ. तभी तो वो ignore करता है. तभी you see people, kids getting cranky, saying them
बैड थिंग्स, यू नो, पेरेंट्स से भी आजकल Yeah, गाली गलौज yeah. करने शुरू कर दिया, सीख लिया ना अब, व्हाट यू एक्सपेक्ट, So much हाँ, exposure. व्हाट यू एक्सपेक्ट, Yeah. हर तरह की reel is available. I mean, I can't even tell you the level of quality content has been floating around. I mean, I don't know how Instagram even allows it, but I saw one. I don't even want to go in length with it, but it involved nudity to its Okay. core, and I was really surprised. I mean, like I wasn't Okay. expecting this. Okay. There are hacks, there are biohacks, there are people cheating on their spouses, and they're putting up reels about it. Really? Yes. Okay. I am not kidding. I have distanced myself from Instagram a bit compared to Twitter, X. Okay. Okay. X pe I learned everything. Okay. And I have good control about everything. Okay. Okay. Instagram pe I barely have control over any other content. Instagram pe I have a pseudo page where I am a nationalist. I talk about what this country actually is and what should be and what needs to be. But I do my Instagram live and I talk and I do an AMA. Ask me anything. Okay. And people happily oblige. They join in. I started doing it for 1 hour, then I pulled it for half an hour, then 20 minutes, 15 minutes, and let's see how long does it go for tonight. Yeah. I do all of that. So, are there any क्या बोलते हैं उसको controls apps? There are many apps ना जो हम लोग install कर सकते हैं अपने devices के ऊपर. Especially for children, I'm talking about parental control for the children or teenagers or so कि मतलब उनका screen time उतना. But it comes at a cost. अच्छा, those apps. No, this is for practice. Okay. Do you want to? The kid is learning a lot not from staying at home but meeting its friend circle. Okay. There are certain part of the friend circle which can bypass all of this. Okay. And they sit together and they enjoy the content together. Okay. So if you मतलब एक बच्चे का restricted है तो there'll be another kid available with that. Okay. किसी का बड़ा भाई है फॉर एग्जांपल, बड़ा कजन है, जो भी है, वो सिखा देगा बाईपास करना कैसे करते हैं इसको. Okay. So controls are. It's a false narrative. हाँ, false narrative. It's a false narrative. नहीं हो पाएगा. आप नहीं कर सकते कंट्रोल. आप नहीं कर सकते. You can file certain applications on the doorstep of the court. You can complain to regular authorities. You can, like, I give you a small example. Okay. Since I teach in college, we are getting new students every year. Right. ये जो नए बच्चे आते हैं ना, they are being victimized. Okay. Victimized not because they are being told to rag or anything of that sort, to be part of the ragging process, but what happens is seniors or maybe some familiar people of the seniority, they tend to take photographs and then they tweak the video or they tweak the image. है ना? And then that gives them a sense of anxiety. कि सर देखो ना मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, this person is calling me gay, this girl is calling me lesbian, anything of that lot. I went up to them and I gave them a good one. I said, if I found someone getting involved in this, first of all, I'm going to file a police complaint with cyber law, cyber crime. It's going to be a first thing. I'm going to slap that FIR in front of your face and I'm going to make a video out of it and send it to your parents. I saw some faces turning around. I saw someone gulping, taking a huge gulp. ठीक है. And then they realized कि यार ये बंदा मजाक नहीं कर रहा है. आपको बस information नहीं है, that's a different story. But there are provisions in place. अगर आपके पास scam भी होता है ना, financial scam, 72 hours में RBI is responsible enough to give you the money back. RBI ने इतना बोल रखा है कि बैंक को बोलो, हाथ खड़े कर देगा, बैंक का वो काम नहीं है. At least they're supposed to help you out in this case, right? Make a double factor authentication, saying change your password, getting you a new set of credentials, new checkbook, new bank account, new something. कुछ तो करेंगे ना, बैंक का काम ही है यार पैसे मेंटेन करना. और बैंक बोल देगा नहीं हमारा काम नहीं है जी. That's not how it works. That's not how. Okay, so RBI has this in place. People are not well versed about it. Yeah. People are far more occupied with their daily chores. Daily basis पे तो उनको कुछ कंप्लेन भी होता है तो वो खा जाते हैं उसको. They just gullify it, right? Okay. Especially males. हम तो बहुत gullify it. Females are very outspoken in comparison. Like a mother of my house, ठीक है? She'll be like क्रांतिकारी, full इनकलाब जिंदाबाद. हाँ, my dad will be like, hey, शांत, please, come on.
लाइक नहीं नहीं, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाँ, ऐसे कैसे कर लिया? ऐसे कैसे कर लिया, ऐसे कैसे बोल दिया, Right, ठीक है. right. Then she'll start provoking my father. Hey, you are something. You should be focusing more on this. What has happened to you? ये वो ये. हाँ, फिर परेशान हो कि भाई चलो करते हैं. Exactly, That kind of an exactly. So I approach. teach my kids the same thing about marketing also. कि आपके घर में छोटा बच्चा और माँ है ना, हाँ. उनके आगे किसी की नहीं चलने वाली. Okay. किसी की भी नहीं चलने वाली. अगर माँ ने बोल दिया है कि ये चाहिए, ए जी हाँ. मेरे बच्चे को दिला दीजिए, done. Okay. Done. फादर हैज टू ओब्लाइज. अगर छोटे बच्चे ने बोल दिया किसी दिन घर में कोई ओकेजन हुआ, कुछ भी हुआ, मुझे वहां जाके वो खाना है, बेशक फादर को मन होगा मुझे बिरयानी खाना है जाके कहीं पे, वो बोलेगा मुझे पिज्जा बर्गर खाना है, चलो भैया पिज्जा बर्गर. आपकी क्या मर्जी है, कुछ नहीं है, गाड़ी निकालेगा. But there's no way we can change this approach कि बच्चे को समझाए या कुछ करे. I mean, हाँ, exactly, वही मैं, that's what I'm going to stress more back to the same practice where Yeah. we have to tell him that hey, you were on your screen time, wonderful, what did you learn? Okay, you learned that. अच्छा ठीक है, good. Now we're gonna give it a rest, okay? Take some deep breath. Good. Close your eyes. अच्छा, perfect. Do you want to wash your eyes? Is it burning or anything? No. Okay, fine. Super, great. Where is your book now? अच्छा, show me that book. अच्छा, what did you learn? अच्छा, you haven't touched that? Okay, so right now it's this much time. In like half an hour, I'll come back and I'll explain this chapter, okay? I want you to explain this chapter. that is the approach. That is the steady approach how you deal with it. If you raise your voice, because I have seen it and I have done all of that, and then I realized कि नहीं यार, काम नहीं कर I have to be very careful about these things because there are few students who have left the comfort of their home. Every day they're thinking about कि यार यहाँ से मैं फ्री होंगे, मैं घर जाऊंगी, अपने बिस्तर पे लेटूंगी, मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगी and everything, right? Right. वो सब मिस करता है, घर का खाना मिस करता है. मैं घर से खाना लेके जाता हूँ ना, वो मेरा कभी कभी लंच छीनने की कोशिश करते हैं कि सर क्या लाया हो खाने में. ये होता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए. मैंने कहा यार तुमने क्या डिजर्व किया जो घर से बाहर निकल रहे हो. हाँ कुछ किया होगा तुमने घर वालों के साथ बहस बूस, ठीक है, बट अच्छा नहीं लगता ना. एंड देन आई टेल देम, एंड you know how fees are in today's day. The parents are spending close to 25 lakh just to get three years of worth of their patients. And degree हाथ में आएगा for this reputed colleges college or and- university yeah, anything yeah. or regardless of the fact कि इसको placement मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे चल के. True, Because true. I've heard other colleges barely any placements left. With IIT अच्छा. also, you must have heard recently 4 lakh package of IIT. It's It's unfortunate 4 लाख कि- साल का महीने का मिलता था IITians को, अभी एक साल का पैकेज 4 लाख का IITians को मिल रहा है. Something is amiss. Something is definitely amiss. True. So coming to organizations, ये तो चलो हम लोग थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स का, बच्चों का बात कर रहे थे. I'm sure many companies have these restrictions on their screen time and all that for their employees, right? कि certain apps will not work during office hours and all of that. They have been successful in doing that, right? Employees उतना screen exposure उनको मिलता नहीं. They can't access Facebook, Insta on their computers. No. But they will still have access to their phones. Yes. So employees भी उसमें से बच नहीं सकते. नहीं. They will रील still कल्चर से have- कोई नहीं बच पाया. रील कल्चर से इतने सारे प्रभावित हुए हैं. किसी को कोई रिलेटिव या फ्रेंड मिल गया है जिसने बताया कि मैंने इतने बनाए, मेरे पास इतने व्यूज आ गए, मेरे इतने फॉलोअर बढ़ गए, तो अब मुझे ब्रांड डील्स आ रहे हैं, अब मैं मोनेटाइज हो रहा हूँ, अब मेरे को पैसे आने शुरू हुए हैं. डू यू नो द एवरेज कॉस्टिंग ऑफ वन रील? No. टेक अ गेस. जस्ट टेक अ गेस. गिव इट अ नंबर. Maybe 5,000, 10,000. So you're gonna you think if you're gonna make a reel? अच्छा, earning you mean? Earning. Oh, earning. earning. If you I have a have million no follower, idea. if you have a million follower, think for a second, just for 1 second, just think हाँ, about it. हाँ. If you have a million follower on Instagram हाँ. and you do one reel, how हाँ. much do you think you're gonna get? 5,000 maybe? I'm just throwing a number. I You're have just no throwing a idea. number, right? Make it 15 lakh. What? Wow. 15 lakh for an Instagram reel, 10 lakh for a YouTube short. They help market the channel a lot, like crazy numbers. Crazy Okay. numbers. There's one brand right here in Bargaon Sheri by the name called Brotomotive. Okay. They have a normal garage. Locomotive. Brotomotive. Okay, Brotomotive. So it's just there in Bargaon Okay, Sheri. Okay. I met this guy, Parikshit Hans. So he's also from Delhi. So Okay. he's doing phenomenally well. Huh. He has his own range of products line now. He's expanding his business. Huh. He's growing his network like crazy. And I met him and I saw the workshop. And all they do is make sure that the quality is delivered as per, not just as per, but beyond expectation for the client. Okay. They, मैम अपनी गाड़ी भी दोगे ना रेस्टोरेशन के लिए भी, वो बोलेंगे 1.5 महीने बाद आना. Oh, he's that busy. Yes.
They have Okay. marketed themselves very well out of YouTube, out of Instagram. They do an Instagram or automotive daily. आज हमारे स्टूडियो में ये गाड़ी आई, आज हमारे स्टूडियो में वो हुआ, आज हमारे गैराज में ये से हुआ, आज लाइट चली गई, आज जनरेटर आया, डीजल खत्म हो गया. You see the kind of Goodness. communication they're building on a daily basis out of Instagram. Just Instagram की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? They're building the audience on Instagram. YouTube पे तो and combine everything is 6 million. Wow. They're earning really good. So, but he's one. Okay, Brotomotive एक है. Right. ऐसे पता नहीं लाखों ब्रांड्स होंगे या लाखों लोग होंगे जो डालते होंगे. Hmm. So how do people remember all this? कितना ओवरलोड हो रहा है ना इन्फॉर्मेशन का. होने दीजिए, कोई But दिक्कत नहीं. कोई People are दिक्कत loving नहीं it. है. People are loving it. Because out of all the 7 days, at least you have 2 days maximum where you can go back to your watch later list. You Okay. can visit your downloads list. You can visit your other. You don't have the luxury of watching a 3 hour long podcast, right? So you prefer watching in 3 go, 1 hour each. So you know कि मैंने इसका 1 घंटा खत्म कर दिया, 2 घंटा रह गया, right? Right. तो और क्लिप्स ने तो बहुत ज़्यादा वो Yeah. एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं कि यार ये तो देखना ही देखना अब तो. So when I got into making podcast, so for me 1 hour, 1.5 hour अगर content interesting है, conversation interesting है, तो people will watch because we watch other podcasts. But there's so many people who came forward कि नहीं Sarika make it 15 minutes. I said 15 minutes? I said hi hello में ही खत्म हो गया 15 minutes. 30 minutes या maximum 45 minutes is what you should keep. Beyond that, people have very short attention span. And तो विद रील ऑल्सो 3 सेकंड के बाद अटेंशन स्पैन चला जाता है. yeah. So where are we heading with all that? We are heading towards people losing out more on text, more on say books, novels, Yeah. and more towards online. I know one gentleman in Pune who had a beautiful bookshop. He had to shut it down Naturally. because people are losing the habit of reading books. I have my relatives who are studying for UPSC out of YouTube now. Okay. Okay. Think about it. So are we really heading towards a time? It's a hybrid where- theory. It's a hybrid theory. As of this moment, I can say I can't tell you exactly what will happen in the future because say अभी रास्ते में आ ही रहा था, मेरा GPS खराब हो गया था, showing me in the middle of a farm. Huh. Just as I'm about to leave my Right. society, it's showing me in the middle of the farm. Then I realized, okay, somebody told me some sun, plasma radiation happened. Might have knocked off one of the satellites. Okay. Might have. Okay. ठीक है. And then the Google will learn about this maps and then fix it up. And they did. By the time I hit the main street, it was fixed. Okay. These That things was happen. quick. These things happen. And they will happen for sure. There's one movie of Johnny Depp. I can't remember the name. I'll get back to you on the name. Okay. He uploaded his consciousness on the internet. Acha, movie is about that. Yeah. Oh my God. Yeah. It's amazing. It's a good watch. You should watch it. Acha. Seriously. He uploaded his consciousness on the internet so he can stay closer to his wife. And the way he built his empire after that, you should have seen it. I mean, it's crazy. And the only way they could stop him was to cut the internet down. Oh God. Acha. It sounds a little dystopian, but you've seen Kalki, by the way? I love that movie. I watched it almost like 5 times. Actually, so कल्कि के ही मतलब रेफरेंस के पहले, like maybe few weeks पहले, we were with our family kids, and then we were asking them about some mythological characters if they knew. And they are like, no, आपने जो example दिया ना कि no, we know Greek god, we know this god and that, but ये नहीं पता. ये तो कुछ भी नहीं है. क्लास में मैंने बच्चों से पूछा था कि शिनचैन कौन है, सब जानते हैं? रेज योर हैंड्स. हाँ. डोरेमोन कौन है? हाँ. 5 पांडवों के नाम बताओ. हाँ, ये वही हुआ. And then when we saw Kalki, the movie, Yeah. we realized कि अच्छा, I think this was required to dramatize it, to create the movie like this, ताकि ये बच्चों को थोड़ा बहुत पता चले Exactly. about who's Kalki, some story behind it or whatever. कुछ नहीं मैम, चिरंजीवी कंसेप्ट नहीं पता, Yeah. ये नहीं पता, 10 अवतार पूछ लीजिए, वो नहीं पता. नहीं, हाँ. एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का अगर एग्जांपल मांगो तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थ्रो कर देंगे आपके चेहरे पे. Correct. You learn about 10 avatars. That is evolution of life. Yeah. Kalki will come, bring the world on fire, clouds will go up, black clouds, rain will fall, everything, water will rise, and the first thing that will happen is going to be Matsya.
it's a cyclical effect. People don't realize it. Realize it, yeah. They don't. They're like कि नहीं हम तो एप बनेंगे, हमें सामने पेड़ दिखेगा, हम will try to pluck the closest fruit, and then oh अच्छा we are trying to fix our back. Oh okay fine, I can manage it with my 2 feet. Yeah. Hands are different. Yeah. So then, are we saying really that The world doesn't want to accept Vedic sentiments. sentiments? The world is not ready for Vedic sentiments. I'm happy with the fact that there are few people who are realizing that my ultimate life goal is to settle in India, learn more about Vedic mantra, learn more about this, learn more about that, ISKCON culture, BAPS culture, whichever, and I respect that. But there are certain elements who call it demonic. They say we are uncouth. एक recent vlogger है बॉल्ड एंड बैंकरप्ट करके, उसकी भी recent वीडियो आई है. Okay. उसने इंडिया को पूरा एकदम गलत तरीके से दिखाया है, ठीक है. एंड उसका आदत ही यही है कि वो सस्ती ट्रेन लेगा, स्लीपर क्लास में जाएगा, वो सस्ती बस पकड़ेगा, उसमें जाएगा, एंड देन ही इज गोना ट्रैवल द कंट्री. ओके. रिसेंटली ट्रेन से जा रहा था बनारस दिल्ली से, एंड देन रास्ते में हाउ पीपल टेंड टू डिफिकेट नियर द ट्रेन ट्रैक, राइट. तो ही इज लाइक ओ मैन दैट मैन इज टेकिंग अ शिट्स, दैट मैन इज टेकिंग अ शिट्स, ऐसा पॉइंट आउट कर रहा है. उसको क्या मालूम कि हमारा देश इतना ग्रीन इसलिए ही तो है. उसको नहीं पता ये सब, ठीक है. इट माइट साउंड लिटिल फनी बट दे आर हैप्पी विद इट. एंड गांव देहात में जाएगा तो पागल ही हो जाएगा फिर तो, where they defecate in the open because they know they're going to give it back to the nature and it's going to turn out as a fertilizer. उसको क्या पता है. अच्छा, so he's showing the हाँ थोड़ा कहीं पे पानी जम गया तो भाई दिल्ली में तो वैसी बुरी हालत हो रखी है इस टाइम पे. तो you have two separate entities, power entities fighting against each other. It's the people of Delhi who are suffering. I know this because I am from Delhi. My parents are still in Delhi. They know it. They say it every single time. एक तो मेट्रो ढंग की नहीं बन पा रही मेरे घर के सामने, इतना बुरा हाल हो रखा है. कब से बन रहा है, कब से. Let's see. I'm traveling next week, so let's see. Okay. So coming back to this whole detox wala thought process, is it really difficult to have like a digital detox or move ourselves away for some time? Only if someone or some family tend to form this practice of going off grid. Okay. Then I think it's going to be really helpful. Imagine as a family, you're just out somewhere in the middle of the billions of stars you can see. Fresh air, fresh water, fresh fruit, fresh vegetable, everything organic. It's like a dream come true. And over there, you just forget for one point of time that, hey, I had a smart device on me. Where the heck is that device? I am familiar with doing this and that. Yeah. Rather than feeling the grass, yeah, looking at butterflies or just saying hi to cows or livestocks. Yeah. Hey, वो चला गया ना. People realize it when they travel. उनको अच्छा भी लगता है when they are away from the internet because they're enjoying so much, but then the moment they come back to their own surroundings, it is like a quick shift. वहाँ से यहाँ आ गए, immediately on the phone. Yeah, the moment you're exiting that village life, phones आ गए हाथ में. हाँ जी, copycat marketing. I'm teaching copycat marketing, same चीज़ है. आप पुराने फोटो देखेंगे जिसमें लोग तब hats पहनते थे, काम पे जाते थे, long coats and hats. उस जमाने में वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने में भी. तो क्योंकि वर्ल्ड इवेंट होते थे तो फिर उस टाइम में मीडिया वो यूज्ड टू टेक लेवरेज आउट ऑफ इट, राइट. कि अरे हो क्या रहा है, हम बताएंगे आपको मीडिया वाले. आज इसकी लड़ाई हुई, आज वहां पे गोली चल गई, आज ये हुआ. Everybody is reading this big ass paper, right? And one guy is reading it, everyone is reading it. Correct. In a train that had some commute from the suburban to the main city, सब रास्ते में वही पढ़ते जा रहे हैं. सेम चीज वही हो गया, सब फोन में लगे हुए हैं. So it's a copycat culture. Why is one doing it? Why I'm not doing it? Why is that this guy is nodding his head and listening to the song? Why can't I do it? Why is there a big headphone? Why can't I get one of those big headphones? Right. So it's a copycat culture. It's copycat marketing. It's there inherent inside of us. That's how businesses also work. Okay. You see one person just opening up another industry. I'm going to do the same thing. Correct. It's going to be a different aspect to my business though, but it's going to be on the similar line. So it is eventually going to be difficult to control ourselves or to create a balance, or we'll have to just succumb to what's happening around us. If I was going through the conversation like you and I had over the call, and just as we dropped the call, I realized that because my mother-in-law is here and my wife is here, right, and my father-in-law is going to be visiting soon.
him being in military Hmm. has a different kind of a mindset altogether. And I like to believe that the government should be serious to mandate all youth before they turn 16 to go through a mandatory 2-year military course. You know what? We also have thought about this many times and we believed कि ऐसा होना चाहिए. मैम मैं एक हफ्ते के लिए गया था थैंक्स टू एमिटी यूनिवर्सिटी. Okay. उनके में होता है फिक्स है एक हफ्ते के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम करना ही करना है. सो दे हैव आई वाज फ्रॉम एमिटी नोएडा. Okay. हम लोग एमिटी गुड़गांव मानेसर गए थे. वहाँ पे Okay. उन्होंने प्रॉपर बना रखा है. आप मानोगे नहीं आई नेवर रियलाइज आई हैड दैट मच ऑफ फ्लेयर इनसाइड ऑफ मी. ठीक है कि भाई अब बस 10 सेकंड रह गए गेट बंद करने वाले हैं. जो अंदर आ गया वो जीत गया जो हार गया. मैंने कहा नहीं यार जीतना तो है. सुबह 5 बजे उठाऊं ब्रश नहीं किया हूं कुछ नहीं खाया हूं मुझे नहीं पता पर जाना ही जाना है. अंदर जाके कोलैप्स कर गए बेशक. Correct. लेकिन आई फेल्ट गुड कि खड़े Yeah. होकर फोटो खींचना है. खड़े हो जवान खड़े हो. मैंने कहा ठीक Yeah. है सर खड़े हो गए आ गए. सो ये जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है ना हाँ वो innate आना चाहिए और yeah the systems around us should inculcate thanks to that. Agniveer scheme at least things are shaping up in that direction. Okay. But I believe in the coming period of time it's going to be a mandate because we have so many adversaries around us who are trying to instill bad policies, bad faith, bad karma, so much so that they think we are inferior and they are superior, and which is going to be so it's going to bite them back in the bum sooner or later. So I mean Indian Army is the best. Yeah. There's no one like them ever at all. That's another podcast. I think so. That's another podcast. Yes. Yeah. So, how successful have you been, to transfer this information with your students when you're teaching them? कि भाई थोड़ा balance Not create at all. करो. No. Not at all. I'm teaching a bunch of like 60 kids, so the ratio is 6 to 60. Okay. 6 are the ones who are giving good responses to what the practices are being shared in the class. Okay. But the rest of them are like, sir, we're not really interested. Okay, we just come here for attendance and college. We're too cool for school. Okay. So, अच्छा. हाँ. So they want to enjoy more outside the class. ठीक है, fine. That's their wish. But the parents are not agreeing to that. So I tell them that your parents are not wasting away their money just so that you can spend more time outside and less time inside, right? They want results. Right. Right. So please promise them results like you did and try to live up to it. अभी क्या हुआ था 2 बच्चे आए थे मेरे पास and they said कि सर हम लोग we are working on this new game and we would like your help on this and said तो ये PUBG जैसे गेम से कितना डिफरेंट होगा. कह रहे नहीं सर थोड़ा लाइव एक्शन तो होगा उसमें लेकिन हम सोच रहे हैं इसको मार्केट करने का. आप थोड़ा बताओ ना कैसे मार्केट करना है. मैंने कहा पहले तो मुझे एक बात बताओ तुमने इसका अल्फा बेटा टेस्टिंग किया नहीं किया. पहले अल्फा टेस्टिंग तुम्हारे एंड पे होगा. बेटा टेस्टिंग एक सैम्पल साइज लोगे उनसे फीडबैक लोगे. अब आपने अनफिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में अगर लॉन्च कर दिया और उसको मार्केट भी कर दिया तो अच्छी खासी गालियां भी मार्केट होंगी आपको. तो प्लीज वो नौबत मत आने दो. रादर देन दैट फोकस ऑन अल्फा बेटा टेस्टिंग. कह रहे सर नहीं इससे क्या होगा एक और ऐप बनेगा सेकंड एंड देन थर्ड पे हमारा किक ऑफ कर जाएगा. ऐसे मत फोकस करो. यू जस्ट एमिंग रियली हाई एंड दैट साउंड्स रियली अनरियल टू बी एग्जैक्ट. बट जो है उस पर फोकस करो. अभी एक चीज है उस पर फोकस करो. जैसे ही वो ऑटोमेशन में चला जाएगा आप दूसरे पे तब आना. कह रहे सर थैंक यू सो मच सर अभी हमें रियलाइज नहीं हुआ. अब आप बोल रहे हो तो ऐसे हमें रियलाइज हो रहा है. तो देयर आर सम हु रियली वांट टू चेंज देयर टाइम अहेड. Okay. who also realize अब उनके क्या उनके फ्रेंड सर्कल हैं वो दूसरे कॉलेजेस के हैं. वो आते बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट ही नहीं हो रही भाई. तुम्हारे में तो हो तो रही है कम से कम. तो वो बोलते हैं इससे पहले ये नौबत हमारे कॉलेज में आ जाए. ठीक है बिकॉज AI एंड चैट GPT एंड देन यू नो हाउ थिंग्स आर टर्निंग इनटू एंड वी गोना टॉक अबाउट AI इन अ बिट. ठीक है तो वो इस चीज का डर उनको लगा हुआ है. और ये मैंने उनको बोला है कि बेटा अगर तुम सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ा सा रहोगे ना तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाएगा. Okay. थोड़ा सा अगर तुम सोचो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाएगा. सो प्लीज डोंट थिंक कि हाँ मेरे को इतने पैकेज की नौकरी चाहिए उतना पैकेज का जॉब चाहिए. ठीक है फाइन कोई बहुत कंफर्टेबल होता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट. आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब बट साइमल्टेनियसली आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड माई ओन ब्रांड. राइट वंस दैट ब्रांड किक्स ऑफ I'll leave the job behind. I'll give you another example. There's this very niche American, not niche I should say, very रॉ ऑथेंटिक रूरल अमेरिकन. जैसे काउबॉय वाला अमेरिकन देखा ना आपने. ठीक है वैसा वाला अमेरिकन है वो. ठीक है हे रे माइट ना यू नो ऐसे करके पूरा इंट्रोडक्शन देते. ठीक है द नेम ऑफ द पॉडकास्ट इज कॉल्ड निंजास आर बटरफ्लाइज.
Okay. Very weird name, but they're Yeah. not wrong. Very catchy also. Very catchy also, right? Ninja Yeah. का butterfly, ठीक है. इनका एक साइड ब्रांड है, एक्चुअली मेन ब्रांड वही है, उसका नाम है संडे कूल. Okay. संडे कूल करता क्या है? संडे कूल कस्टमाइज टी शर्ट्स को प्रिंट करता है. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बार और यू हैव अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव योर स्टाफ देयर, तो you need t-shirt that says staff, that should have the logo and everything, right? It should look good, it should have good quality. So they deal in that. Okay. So when they started with this business, they realized कि यार इसको मार्केट कैसे करेंगे हम अपन लोग. Then they think कि चलो पॉडकास्टिंग करते हैं. दो दोस्त तो हैं ही बचपन के, वो सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज और इन सब के बारे में बात करते ही थे. When they used to get high and drunk, तो कहा इसको चलो let's capitalize more on this. The day they started, ma'am, to this point, they're earning more out of podcasts compared to their own business. And in the middle of the podcast, all they have to do is do a small plug-in. This podcast is brought to you by Sunday Cool. Sunday Cool does this, Sunday Cool does that. There's a factory, we do this, there's a staff, this is. Okay. So. Band भी वो famous हो गया, podcast ज़्यादा famous हो गया. इतना कि बाहर बाहर से guest भी आ रहे हैं बैठ के इनसे special podcast कर रहे हैं. कुछ नहीं मैम, वो बंदा, उसकी वाइफ, उसका बेस्ट फ्रेंड और एक और बंदा जो थोड़ा टेक्निकली जो savvy होगा, जो गूगल कर लेगा, ऑडियो सही से चेक कर लेगा, लाइटें चेक कर लेगा, बस. Okay, so this is one way of making a good use of social media to promote what you're doing. Exactly, and it's all organic. They haven't paid even one rupee or $1 extra. Okay. For that matter, all is organic, all of it. Okay. Right, and it is informative. Podcasts are informative compared to watching those stupid reels which have no meaning, which I make would no rather sense. watch a podcast to learn more about something or the other rather than relying on something scripted, because I've come across so many events that are scripted, so many moments that are scripted. I mean, I lost faith in media back in the day, and then thankfully, I should not be saying thank you to COVID, but thanks to those crucial moments those times, and those learnings, I would say that the world shifted to another point of scale. And now I'm glad that, even the biggest TV personalities and radio personalities are coming in and joining forth this whole bandwagon of opening up their own podcast. Ronak, for that matter, is one of them. Okay. If you're familiar with RJ Ronak. RJ Ronak. Red FM, RJ Ronak. Okay. Bawa. Yes, Bawa bolna ho. He does all of that. He used to do all of that, right? Correct, so he opened up his podcast, the Ronak podcast, TRP, ऐसे करके उसने अपना खोला. And then there's one Times Now journalist also. I'm forgetting his name. I think his name is Saurav, if I'm not wrong. He is doing that. Delhi में तो बहुत ज़्यादा गंदा culture है. बहुत, I won't use the word गंदा, but बहुत बड़ा culture है podcasting को लेके. That they have come up with, people are trying to capitalize more on that. So they have dedicated spaces. Like this particular space right now with couches. वो एक है. You can charge 4,000 rupees per hour for this. There's chairs like the ones over there. Right. Pune में भी है, काफी सारे स्टूडियोज बने हैं. So you see what is happening now. It's like a co-working culture back in the day, right? वो co-working culture सबका था. अभी ये co-podcasting culture हो रहा है कि अरे यार यहाँ तो शूटिंग मैंने देख रखी है, वो भी पॉडकास्ट. पता चला लोगों कि भैया ये प्लेसेस हैं, ये रेंटेड आउट होते हैं. Right. And then they also help you with editing. They also help you with marketing the social media as well. In fact, I'm experiencing it myself. I was never active on social media promoting my yoga classes or whatever. But with every podcast, I'm learning so much with the guests. There's so much learning happening. Yeah. And it's not just that. You're networking also. So much, yeah. So much networking more. Networking is a huge Meeting play. people. Yes. Yeah. Absolutely. Otherwise, I was like, yaar, ye ek hi circle hai. I'm just moving around in the same circle. Right. I need to meet more people. There's so much more happening people outside. People are curious. लोग curious हैं. उनको सीखना है every single day. So people, and they should know the right channels probably. Exactly. To learn. If they watch crap every single day, then you become crap. Then don't complain कि यार इतने मक्खी क्यों आसपास मेरे fly कर रहे हैं. True. वो भी है थोड़ा सा. आप AI के बारे में बात कर रहे थे. So उसका virtual reality का कोई impact on AI तो सबने game change कर ही दिया है. Are you familiar with this AI tool by the name called Midjourney? Midjourney नहीं. Midjourney बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है. Okay. And और भी इसके हैं, काफ़ी alternatives हैं. फोटोज कोई क्रिएट करता है. Okay. Right. उस दिन ही मेरी फैमिली ग्रुप में मेरी मॉम ने भेजा, oh such a beautiful video. And then I looked at it and I was like, something is off about it. And then I told her, Mom, don't believe this. This is not a real video. It's an AI built video. So but it's so difficult to even understand it for parents, especially. You have to go into the intricacies of it or the detailing of it. Say, for example, they're showing you a video of a bird passing by the mountain. Yeah. Right. How realistic is that bird's movement? How realistic is the camera movement?
I saw one footage where there was a family just having fun on a boat, and then driving through a small reservoir, and then there's a guy nearby. His house is there. He's resting, is enjoying outside. So this guy on the boat waves him back at him, and then I pause it, and then I see the guy sitting behind the guy who's waving. His hands are crossing like this. Okay, and then the water, the reservoir where the boat is supposed to go, you're supposed to see the ripple effect, right? The water is stagnant. So you see the machine is trying to learn gradually, slowly, and slowly. So it's very close to becoming realistic, no? I think as of now, an average general intelligence is close to its teenage years. Okay. Okay. So Wow. you make a lot of mistakes when you're a teenager, right? And then slowly you turn a adult at the age of 18, 5 years down the line. Then imagine 10 years after that. Yeah. I was. Are you familiar with the Google AI? Yeah, Gemini? Yeah. Are you familiar with the fact that you can ask your Google AI to book you in a salon appointment? Oh, ये नहीं पता था. They've done that. There's this one video of Google input-output event where they show that the Google AI is actually talking to the person who is the salon receptionist, and the AI is helping fix the. Oh my God. Wow. पता नहीं कैसे दिन आने वाले हैं. You never know. Okay. Modi ji, for that matter, whenever he travels and campaigns across other part of the country where they are not comfortable with their Hindi, and he knows Hindi and he knows Gujarati and he knows English, right? Say he is going to some place where it's Bengali or Telugu or Tamil, he makes sure the people get a small headset, and that is connected to a mainframe of AI. Whenever he's speaking real time, it's getting translated. You can hear But it. to that accuracy? Wow. Okay. Quite No wonder scary. he Yeah. made the good comeback in Odisha, right? And Kerala, you have one little hope. He's trying Using really hard. technology. This guy is Yeah, trying yeah. really hard. Really hard. I don't know. Like the other day, I was watching somebody say कि I don't have time to read so many books. So I just put the name and AI gives me the synopsis of the book. Right. हो गया, book पढ़ लिया. I know what the book is all about. And I'm like, ये कैसे हो गया? You know, you're missing out on so many aspects of reading a book. आजकल of course many people Time read नहीं है it ना, on ma'am. Kindle. Yeah, yeah. आप देखो ना, टेंशन स्पैन 3 सेकंड का है, उसके बाद अंगूठा रेडी हो जाता है नेक्स्ट गियर लगाने के लिए. तो बुक का सोचो ना आप. लोग पॉडकास्ट भी तो आगे फॉरवर्ड करते हैं. किसी किसी को देखा आपने, बहुत गंदी आदत होती है स्किप करने की. Yeah, yeah. Right. Are you also familiar with one small clip रील में कल्चर में नया शुरू हुआ है जिसमें बंदा पूरा नरेशन दे रहा होता है मूवी का फास्ट फॉरवर्ड में. अब ये कैरेक्टर आगे जाएगा, आगे जाके लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ते इसको सामने एक आदमी दिखता है, वो ये बोलता है. ओनली दे वांट टू मैच देयर स्टेटस विथ देयर फ्रेंड्स who are familiar with OTT platforms and certain content, which is, like for example, I remember back in the day when Game of Thrones would release early in the morning. Okay. And all of us had FOMO. FOMO is fear of missing Fear out, of right? missing out. For those of you who don't know. Right. And my friends would come up and say, oh, you'll not believe what happened. And I'm stuck in job. Early morning, I had my shift early morning at Fever when I was working for Hindustan Times. Then early morning shift होती थी मेरी, और वो 7 बजे आता था, वो उड़ जाता था फ्रेंड मेरा, और वो देख लेता था पूरा का पूरा. And I'm like, bug you man, seriously, ये गलत बात है. So imagine ना, वो कल्चर ही है. Okay. Right. So Are you familiar with the concept of watch party also? watch party नहीं. You can invite your friends and do a watch party. Okay. मतलब हर कोई अपनी अपनी जगह से watching a movie और अपनी जगह से भी देख सकता है. You can also invite them and sit down. मैम कोल्डप्ले को लेकर भी देखा आपने क्या हुआ? टिकट के लिए पागल हो रही है जनता. They're crying their heart out. yes. उतना ज़्यादा crying their heart out that the younger audience kind of got together and did a small reunion or what some sort. इनको मालूम ही नहीं क्रिस मार्टिन के अलावा कौन कौन बंदे हैं बैंड में, बस ये पागल हो रखे हैं कोल्डप्ले. इट्स ऑल नथिंग बट फ्लेक्सिंग कर रहे हैं ना. मेरे क्लास में भी 2 बच्चे हैं, उनको टिकट मिल गया है और फ्लेक्स कर रहे हैं सबके सामने. वो कहते हैं सर फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लेक्स. आप भी फ्लेक्स बोलना शुरू कर. मैंने कहा बेटा मैं 1996 से फ्लेक्स बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता है. तब मैं विल स्मिथ के गाने सुनता था, तुम्हें पता था नहीं ना? तब से फ्लेक्सिंग वर्ड मुझे पता है. बस तुम लोग ने आज सीख लिया, तुम्हें लगता है कि हम बूमर हो गए और तुम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए. ये जो मेंटल स्टेटस है ना बच्चों का, कि आपने इंग्लिश सीख ली और आपने आज के कल्चर में अपने को एकदम वो डिप इन कर लिया और बाहर निकल गए एंड यू सुपीरियर देन एवरीवन, दैट इज रॉन्ग. Okay. That is what I tend to teach them कि भैया तुम ये मत सोचना कि तुम ही तुम हो. Even the greatest of the Buddha
said that I know everything yet I know nothing. Yet I know तो nothing. तुम कौन सी खेत की मूली हो यार, मुझे तो ये बताओ ना, इतने बड़े शौक पाल रहे हो, ये है Right. वो है वो है ये है। तो ये कंट्रोल करना मुश्किल है, राइट? नहीं। कंट्रोल तो नहीं, बट नहीं। एक लिमिट करना मुश्किल है नहीं, ना? मैं इसका बताता हूँ मैं आपको तोड़ क्या है। इसका तोड़ यही है, इफ दे ओनली ट्राई लर्न टू हम्बल देमसेल्व्स डाउन। ओके. अगर आपने उनकी ईगो स्टेटस में कुछ पोर इन करने की कोशिश की, इट्स लाइक अ फिल्ड ग्लास, सब बाहर आ जाएगा, राइट? और वही हम्बल हो गए ना, वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, गैस जितना भी है, एंड देन यू कैन पोर इन मोर स्टफ एंड देन दे विल स्लोली लर्न about everything. Like I admire one thing about my nephew, and my sister said the same thing the other day. अभी क्या चल रहा है, अभी गणेश चतुर्थी थी, तो सोसाइटी के अंदर these places where they have this pakoda and puchka and everything, right? Gupchup and everything. So my sister was like कि मेरा बच्चा खाता क्यों नहीं है ये सब? मैं सोसाइटी के सारे बच्चों को देखती हूँ, भैया तीखा ज्यादा देना, ये करना अच्छी वो बात है। करना। नहीं, मैंने बोला, मैंने कहा तेरा बच्चा नॉलेज के लिए भूखा है, ठीक है, और उसको खाने का शौक है चीज, तो उसको तू चीज ही दे और चीजें ला के दे। ठीक है, कि बेटा ये पढ़ना है, ये है वो है। एटलीस्ट मेरी उसकी जो दादी है, कल को कुछ भी अगर वेस्टर्न बात होती है ना, तो वो सीधा ताव मार देती है। शी वाज अ प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो तो सीधा ताव मार देती है कि भैया तेरे को कुछ पता नहीं है, ये तू ना ये अलेक्जेंडर द ग्रेट छोड़ दे, नेपोलियन बोनापार्टे छोड़ दे, ठीक है, ये सब बाद में पढ़ियो, पहले हमारे महाराजा राजाओं के बारे में और हमारे भगवान देवताओं के बारे में पढ़ो, उसके बारे में बता मेरे को क्या जानता है, कुछ नहीं जानता। सो ये फैमिली में से आना चाहिए, फैमिली में शायद बुजुर्ग थोड़ा। एक और फैमिली का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको छोटा सा, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी में है, ठीक है जी। एंड उसके जो रिलेटिव हैं, मतलब उसके चाचा हैं, ही वाज इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके. सो दे वुड स्टे एट कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज। ओके. वहाँ पे काफ़ी सारे सरकारी स्टाफ रहते हैं, सम पीपल हु हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग 3 करोड़ वर्थ ऑफ अपार्टमेंट, तो उन्होंने खरीदा हुआ है, ठीक सेंटर ऑफ दिल्ली में, हार्ट ऑफ दिल्ली में। गुड फॉर देम, ठीक है। हुआ क्या, एक दिन उसका जो बड़ा भाई है और उसका छोटा बेटा है, तो ये अपने भांजे को लेके आया कहीं बाहर से, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। एंड देन गए सामने, ये खिड़की के सामने गए, ऐसे पर्दा है, पर्दे के साइड किया, एंड देन चाचा ने, मतलब मेरे फ्रेंड के चाचा ने बोला, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, कि अरव देख बारिश हो रही है। अरव की मम्मी बोलती है चाचा को, ऑन द कॉन्ट्री सेज, नहीं 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 नहीं, रेन रेन। ओह, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ओके. This is another scenario. I'll explain my scenario now. This is personal to me. मेरा एक फ्रेंड था वीरेन करके, सोसाइटी में ही सामने रहता था, बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग साथ में हैंग आउट बहुत करते थे। दिस इज व्हेन आई वाज इन 2nd, 3rd, 4th ग्रेड, ऐसे कुछ था। एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा इसकी फैमिली शिफ्ट हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है बाद में सब कुछ, ठीक है, जॉइंट से। तो वो चला गया दूसरी लोकेलिटी में, विच इज़ लाइक 5 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। मेरे को इंग्लिश ठीक से आती नहीं थी, बट मैं ट्राई कर रहा था। उसकी मम्मी, वीरेन की मम्मी, एक दिन स्कूल आई, और बस में बैठने से पहले होता है ना, बच्चे को लेके चले जाते हो, तो वो लेके जा रही थी, क्योंकि अभी तक उसका बस फिक्स नहीं हुआ था, तो वो लेके जा रही थी। मैंने कहा, आंटी आंटी नमस्ते, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। मैंने कहा, आंटी यू ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर लोकेलिटी टू द अदर लोकेलिटी? शी वाज लाइक, यस बेटा, आई शिफ्टेड। मैम आप मानोगे नहीं, उस दिन जो दिल में दर्द हुआ ना मेरे को, छन से टूटा सपना जग सुना सुना लागे। एकदम बुरा लगा मेरे को उस टाइम पे, इतना बुरा लगा कि यार मेरे से ट्रांसफर की जगह शिफ्ट नहीं बोला गया। मैं घर गया, आई टोल्ड माय मॉम अबाउट दिस। मॉम गॉट डैम सीरियस, शी इज लाइक, आई एम गोना फिक्स यू इन इंग्लिश ट्यूशन टुडे, राइट नाउ। ओके. एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ. I started getting English newspaper at home. I started watching Star movies, HBO, Star World. I was enjoying Terminator movies, like Terminator. I was enjoying movies like Hacker. Angelina Jolie की एक movie है बहुत पुरानी. I was enjoying these series by the name called Friends. You know, these cultures started popping up inside of me. But what happened in result was I started losing faith on our gods. To the point where in 2020 I completely on my knees. My mother was in ICU. Battling COVID, and I was on my knees in front of Kali Mata, Okay. to get rid of all the evils around us, and that changed me entirely. So, in some way, if we ask us younger ones to instill their faith into spirituality more and getting back to the books, maybe they'll able to bridge the gap of learning Right. more and more.
राइट। तो ये अगर प्रैक्टिस छोटी से करें ना कि भैया बेटा आपने वैदिक मंत्र सुनना है सुबह उठ के, ओके, आपने सनराइज देखना है सुबह उठ के, एंड आपने ये एक बुक तो पढ़नी है, बाय हुक बाय क्रुक। राइट। सोने से पहले ये बुक पढ़ लो, सुबह जल्दी उठो, सनराइज देख लो और वैदिक मंत्र जाप करते रहो, एंड सी द काइंड ऑफ एनर्जी यू विल हैव फॉर द होल डे। जितनी भी आसपास नेगेटिविटी होगी ना, you'll be able to fight it also, not just run away from it, you'll be able to fight it also. Wow. So it has to start at the grassroots. It has to घर start पे at the ही। grassroots. It has to be like, and you just can't put it in a perspective कि यार हाँ जोड़ लिया, खड़े हुए हैं, बोल दिया, कर दिया, नहीं, have faith, उस पे विश्वास जगाओ। और हम इसलिए बोलते हैं ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल है, बच्चा सो रहा है, उसके सर के नीचे हम हनुमान चालीसा क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चास आर द रियल टारगेट्स फॉर दोज बैड एंटिटीज। उनको कुछ दिखता है ना तो उनको लगता है ये कोई खेलने आ रहा है, तो दे ओपन देमसेल्व्स एंड इनवाइट देमसेल्व्स। एंड किड्स आर वेरी इजी टारगेट फॉर evilish entities. They're very easy target for devil entities. No wonder kids are getting cranky these days. No wonder the level of anxiety is rising. No wonder they're committing suicides. No wonder they're hurting themselves to the core. I was going to come to that point actually कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही है ना, उनको क्या वो उनके आंखों में वही मिक्स्ड रियलिटी, वही मैं कह रहा हूँ ना। आपने अब देखा एप्पल विजन प्रो आ गया लेटेस्ट, अब आप सोचो ना पूरे रास्ते बस ऐसे 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 करते रहेंगे पूरे के पूरे, क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है। फ्यू मंथ्स बैक किसी बच्चे ने सुसाइड भी किया था गेम के ऊपर। आई थिंक ऑनलाइन गेम था, उसमें हार गए, पता नहीं, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट ही कमिटेड सुसाइड, अ टीनेजर। व्हाट अ लॉस फॉर पेरेंट्स। As per even rules of RBI, 18 below you can't have a PAN card, right? So you cannot get a UPI, you cannot use UPI. But kids have smartphones now. 18 below. So there's this another app where you can ask people with UPI to preload money into your app, and then you can use it at other UPI counters. Can you imagine? There's always a workaround. There's always workaround. There's always a workaround, and you cannot fight it. True. Because somebody, when they told me कि हाँ you can lock the screen, the kids will no. But then when you mentioned कि भाई बड़े भाई को वगैरह, I'm like, ये क्यों नहीं सूझा मुझे कि there'll always be a workaround. वो बताएंगे नहीं, या करते हैं बाईपास। करते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों ना लेवरेज करते हैं। भाई मैं मम्मी को बता दूंगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है तू मेरा काम कर दे, ठीक है, ऐसे करके वैसे करके ये इंटरनली चलता है इनका। और मैम इंडियन किड्स आर वेरी स्मार्ट। बाहर के बेशक इतने नहीं होंगे, बट हमारे भारतीय बच्चे बहुत महान हैं, बहुत। या सो ग्रासरूट घर से ही शुरुआत होनी है ये, एंड आई गेस पेरेंट्स शुड टेक इट अप। एक छोटा सा प्रैक्टिस है, आप नया न्यूबॉर्न है ना, न्यूबॉर्न के सामने आप लगे रहिए फोन पे, वो भी वही करेगा कॉपीकैट मार्केटिंग। मैं वही बोल रहा हूँ, दे इमिटेट व्हाट पेरेंट्स डू। हाँ, तो आप बुक लेके बैठ जाइए, देखिए वो कैसे बुक पकड़ता है। फिर आप टीवी बंद कर दीजिए, देखिए वो भी टीवी की तरफ नहीं देखेगा। पेरेंट्स लोग तो मैं खैर अब उनके नीड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट वो सामने वो चला देते हैं ना लोरी एंड ऑल दैट, वो सब जो पूरे हैं, ठीक है, इट्स फाइन टू वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट कब तक यार? कुछ म्यूजिक चलाओ ना, उसको सुनने तो दो, उसका आनंद लेना दो, उसको बोला आंख बंद कर बेटा, सुन इसको, इमेजिन, हैव गुड इमेजिनेशंस, ठीक है, फील अबाउट इट। ट्रू। The kids are learning English words more comfortably rather than Hindi words. And also, unfortunate है कई जगह पे when we go to restaurants or some public places and we see parents बच्चों को पकड़ा देते हैं कि भाई तू चुप बैठ अभी, let me have my time sort of a thing. So that is also a very unfortunate thing कि गाड़ी में भी गाड़ी में you see they have their own ISOFIX seats, उसके सामने उन्होंने अपने सीट्स के पीछे जो हेडरेस्ट होता है उसके पीछे वो बड़ा सा आईपैड लगा के रखा हुआ है, कॉन्स्टेंटली वो चलता रहता है। एक छोटा हाथी घोड़े पे चल, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, समथिंग और द अदर इज पॉपिंग अप। एंड आई रिमेंबर बचपन में, हमारे बचपन में, व्हेन माय पेरेंट्स हैड टू गो एंड मीट समबडी एल्स, हम लोग घर से किताबें ले जाते थे ताकि बड़े बैठ के अपने बातें करें और हम लोग बैठ के फिर किताब पढ़ेंगे। वी यूज्ड टू लिटरली डू दैट, मी एंड माय ब्रदर। तो आई डोंट नो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एक बुक पकड़ा देना बच्चे को। इवन इफ दैट्स नॉट द केस, चलिए मान लिया एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो बुक खत्म हो गई, उसके बाद आप क्या करोगे? यू स्टार्ट एंगेजिंग इन द कन्वर्सेशन, स्टार्ट लिसनिंग। अरे घर में दूसरा बच्चा है साथ में, उसके जाओ ना, खेलो, सर फोड़ो, गिरो नीचे, मिट्टी खाओ, कुछ तो करो, पत्थर मारो, अरे भाई कुछ तो करो। वो खत्म ही हो गया ना, फेज ही चला गया। जब से इंटरनेट आया है उसके बाद से तो बाहर जाना एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था फीमेल ऑफ द फैमिली को, क्योंकि दे वर होम मेकर्स मेजॉरिटी ऑफ देम, राइट? तो वो होता क्या था कि चलो बच्चा आ गया स्कूल से, अच्छा अब क्या करेगा ये, अब भी धूप में दौड़ेगा,
अब ये जाए क्रिकेट खेलेगा, फिर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, उससे पहले पहले उसको घर आना है, राइट? वो खत्म ही हो गया है. थैंकफुली स्पोर्ट्स इज वन थिंग दैट इज कीपिंग द होप्स इंटैक्ट, कि यार एटलीस्ट इसी बहाने बाहर तो निकल रहा है, एटलीस्ट इसी बहाने तो ड्रिबलिंग कर रहा है, एटलीस्ट इसी बहाने तो थोड़ा अपना स्टैमिना को थोड़ा सा वो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है. स्पोर्ट्स इज वन थिंग आई रियली एंजॉय. I enjoy less of cricket and more of national sports, which is Olympics tha. It was phenomenal. Paralympics, another phenomena altogether. Right, Amazing to watch. And I enjoy Formula One. I enjoy mixed martial arts. So I like these kind of sports. I really enjoy watching all of that. Right. Sometimes I even get up and I start doing my shadow boxing. I lift my leg around. I do all this stance and everything. My wife really kills me. My wife really kills me because she's like, you're gonna hurt yourself. And then all of a sudden I stopped in between, and now my body is hurting like anything. My knees are showing me results. She's like, I think you've stopped it. I'm like, yeah, I stopped it because of you. Damn it. You said be careful. And then you were like persistent about it altogether. And then I'm like, okay, fine. I think I should stop it. I should be very careful. Because you have to consider the distance that you're traveling and everything. सब चीज़ देखना पड़ता है. वहाँ पे कॉलेज में मुझे दौड़ना पड़ता है इनके पीछे. They are very quick. Students are very quick. एकदम मैं आया हूँ, मेरे पीठ पीछे भाग ली है. Like bunking the lecture and everything. Now I've taken a back seat. Earlier I used to be very finicky about this. Hey, how dare you get out of my class? Get inside. Now I'm like, relax. They have to, they'll come. If they need to, then they'll definitely come. But अब मैं क्या करता हूँ ना? We have this sheet. We take the attendance. We take the signatures. I take a photo and I send it to the parents group. And they're like, अरे हमारा बच्चा नहीं क्लास अटेंड कर रहा. वो सीधा रेल लगाते हैं अपने बच्चे की. खत्म. So एक एडवांटेज सोशल मीडिया का या तो रादर टेक्नोलॉजी का ये भी हुआ है कि नाउ पेरेंट्स नो एवरी मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड. पहले वो नहीं था. सो देयर आर सम प्लसेस एंड माइनसेस आल्सो. राइट. But two sides of the balance, coin. Two sides of the coin. We have to entertain both sides. वही मैं कह रहा हूँ ना आपको. आग तो लगनी है. पर जब बादल काले हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, तो बाद में तो गिरना ही गिरना है. फिर तो आप पानी को गिरने से भी नहीं रोक सकते. आग को भी नहीं कंट्रोल कर सकते, पानी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. It's all nature. And I believe if you look at the ones who are very good achievers, like for example, say there's this one guy I follow, okay, not follow, I'm familiar with. He's a stand-up comedian. He's very famous right now on YouTube. Okay. His name is Samay Raina. Okay. Samay Raina की story बहुत ही unique है. Okay, do you remember this Amazon special by the name called Comicstan? Where they would compete and everything. So he's, I think, season 2 or season 3 winner, if I'm not wrong. Okay. I never followed Comicstan. Okay. Yeah. I worked with Zakir Khan. I've just heard of it, yeah. I worked with Zakir Khan. I know how he works. I know everything about him. And he's doing phenomenally well right now. But with Samay, story is a bit different. Samay's family is immigrants of Kashmir. Okay. They're Kashmiri Pandits. Okay. So he tends to capitalize more on these incidents that have happened in the past. Like I never knew my Nanaji. Why? Because he died in his sleep. Oh, died in his sleep. What happened? Oh no, we were sleeping. He just died. Okay. Oh God. He's capitalizing on it, and people are like, "Oh damn, this is dark comedy, dude." Yeah. And people are like, "ठीक है, fine, मेरे को मजा आ रहा है." And he's working on it. He never thought about going this road, but when he saw people are enjoying it, why won't he do it more out of it, right? Yeah. He's also a chess player. Okay. By the way, right? He enjoys his one of the podcasts I saw him where he said कि मैं अपनी फैमिली को जब मैं ट्रिप पे लेके जा रहा होता हूँ तो मैं मेक माई ट्रिप में जब मैं जाता हूँ तो ये पहली बार होता है और ये ओनली टाइम होता है कि मैं शॉर्ट में हाई टू लो जाता हूँ. मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से तसल्ली से घुमाऊँ दुनिया और I give them back. अच्छी बात है ना. At least considering the amount of experience that they've had in the past with the Exodus and whatnot, to him now giving them a new hope, a new perspective of life, which is good. Yeah. वो बंदा वैसा है भी नहीं मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है. बस he identified his audience and he went with it. He uses that. Yeah. But in reality, he may be a very different person. He may be a very decent guy. Very decent guy. So, yeah. So, I guess people need to make the right choices and informed choices, I guess. And they have to communicate. मैम इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग ना अपने में ही सब कुछ डाइजेस्ट कर रहे हैं rather than talking to one another. पहले क्या होता था? पहले we used to talk with one another and सामने बोलता था नहीं भाई ये सही नहीं है, ये गलत है, नहीं ये ऐसा होगा, ये वैसे होगा, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं. अब क्या हो रहा है ना, अब पहला सोल्यूशन ही मेरे को गूगल से चाहिए. पहला एडवाइस ही मुझे यूट्यूब से निकालना है. करेक्ट. हमारे पास आते ना कई दफा, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है.
तो हम आपको पूछना पड़ता है, इज इट डायग्नोस्ड बाय डॉक्टर? आपके पास नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे सर्वाइकल, देन वाह, दिल बी लाइक अ शिपिश स्माइल कि नहीं भाई, मैंने तो इंटरनेट से पढ़ा कि ऐसे ऐसे तकलीफ होगी, विच मीन्स इट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। यहाँ पे ये होगा तो आई हैव रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी, यू नो, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। यहाँ पेन हो रहा है तो तो कैंसर हो सकता है। वही तो, ये ऑल ऑफ गूगल दैट, तो सो हमेशा एक्सपर्ट है ना कैंसर स्प्रेड करने में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, Like, या या just incept the idea in your head that you have cancer, and next thing you know, yes, you do have cancer. राइट, Fear is the biggest killer. कोविड में हुआ क्या था मैम? कोविड में यही तो हुआ था, yep fear was yep the biggest killer, yep. and because of our lack of resources कोई टेंशन नहीं दे पाया, and then you passed away. Yeah. And I guess this whole exposure to social media is also killing your creativity. Yes, Something that you would do with your hands. I would and, expect AI to help me out with my daily chores rather than helping out with my Correct. creative aspect. Correct. उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है. मेरा क्रिएटिव एस्पेक्ट कोई खत्म कर रहा है, ठीक है। नाउ Yes. आई कांट इवन वर्क एज अ कंटेंट राइटर एनीवेयर। Right. नाउ आई कांट प्रोड्यूस वीडियोस और एडिट वीडियोस, दैट थैंक यू एआई, यू डूइंग ऑल ऑफ दैट। Yeah, नाउ देयर इज yeah. नो नीड फॉर वॉइस ओवर बिकॉज एआई इज टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। True. Dude, True. that's not what you're supposed to solve out of my life. वो प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। मेरे लिए प्रॉब्लम मेन था कि भैया मेरे को ये चीज कैसे अचीव करनी है लाइफ में, उसमें मेरे को गाइड करो, Correct. है ना। Even tactile functions. टैक्टाइल फंक्शंस, हाथ वगैरह मतलब यूज करना, ग्रिप करना, hand eye coordination. People are missing out on that as well. राइट। So वहाँ यहाँ देख के बात करते हैं, Yeah, ये का yeah. इधर कहाँ हो, इधर बात करो ना मेरे इधर, से, हाँ, आंखें है ना। देख, आंखें आंखों मेरी में इधर देख के हैं, बात मैं करो. उधर उधर नहीं हूँ आसमान में। Correct. Correct. I younger audience, ma'am, seriously, they Is- they are really deviating themselves from the basics. So there's There is hope. there's hope. There is huh? hope. There is very good hope. See, at the end of the day, every other parent want the best for their child, and every other parent is on the internet to learn more and more every single day, and that's where all of the family members are turning a little more towards the humble side. So what is happening is, say for example, we just won the chess championship, we won the gold medal. Yes. So we would like to learn, like, what are the practices are those kids having? What is something that the parents are doing, something unique that we are not doing, and we can make our kid far more phenomenal Yeah. in that aspect. So one question that pops in my head is कि ये जो है, is this across the whole country? कि are there geographical regions where exposure to social media is much more compared to any part? या सब जगह पे है? कोविड के ऐसा टाइम पे कुछ? मैम मैं ना ये पबजी तो नहीं, बट उसका ऑल्टरनेटिव था कॉल ऑफ ड्यूटी करके, मैं वो खेलता Okay. था जस्ट टू किल माय टाइम। व्हेन आई यूज्ड टू चेक आउट द लीडर बोर्ड, कैन यू इमेजिन द कंट्रीज वेयर द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर्स वर फ्रॉम? इमेजिन। India? नो, हाँ. ईरान। Oh. या, अच्छा. kids from Iran were leading the challenges board on Call of Duty game. Then 2021 I'm talking about. Okay. Wow. Exactly. Never expected. Never expected, right? Yeah, I would have said US, यहाँ वहाँ. You should check out Pakistani hackers also. Are you familiar with this new hack that is happening across, where there's a WhatsApp call from +92 number and they're saying आपका बच्चा पकड़ाया गया है, रेप कर दिया उसने आपकी एक लड़की का, हाँ, and then the father on the troubled father parents on the other side, they say हमारे बच्चे से बात करा दीजिए, and then they replicate the kid's voice. ये मेरे फैमिली के साथ हुआ है मैम। Wow. My sister immediately calls me and says, I was taking a lecture with BBA students back in the day, and my sister calls me in the middle of the lecture. She is like, क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं यार, काम कर रहा हूँ। कह रही सासा बताएगा क्या कर रहा है? मैंने कहा क्या हो गया? And you won't even believe, I warned my mother a week ago ऐसे होता from है. that incident कि ये होगा, मेरा वीडियो कॉल भी आ सकता है, मत मानना किसी रैंडम नंबर से, प्लीज मत मानना। नहीं सुनी। The whole day my mother was troubled. She had breathing issues. My dad has nerves issues, and he recently collapsed in March also. Wow. So can you imagine the kind of torment the whole family is going through? अब तो लोग रील बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, because ये अच्छा खासा रोटेट हो गया हर जगह। Wow. बच्चा सामने बैठा हुआ है और फोन में बात करा रहे हैं, बोल रहे हैं आपका बच्चा ये। They have everything. They have all the data with them. मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, आपका बेटा क्या करता है, किधर घूमता है, अभी recent purchase क्या हुआ, they have all the data with them, and they're just trying. So we're getting into scarier times. Yes. Times of unsurety. Yes. Yes. And धीरे धीरे वही आपका फेस मैपिंग शुरू हो जाएगा, and then हो भी रहा है। एक कोई DSP था, उसके पास लिप मूवमेंट हो रहे थे, उसका हेड ऐसे टिल्ट हो रहा था,
पकड़ लिया, 2 मिनट पकड़ लिया कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। प्लस 9 to number इज पाकिस्तान। ओके, वाओ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बैलेंस लाने की बात कर रहे हैं, बट नो, देयर इज अनदर वर्ल्ड व्हिच there's इज another world, हाँ। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड कंट्रीज जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी ना करो कि ओके। I mean, there are part of the world which have different set of rules. I remember going to UAE and meeting a cab driver. उसने कहा आप कहाँ, दिल्ली से? अच्छा, मैं हरियाणा से, यहाँ से, पटियाला से, समथिंग। मैंने कहा और पाजी कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? कहते हैं बहुत बढ़िया है, पर आप मानोगे नहीं, हमारी ना वहाँ देश में ना बड़ी गंदी आदत है। इंडिया की बात कर रहा था, हमारे देश की ना बड़ी गंदी आदत है, लोग कहीं भी रुक के ना सूसू करना शुरू कर देते हैं। आई वाज लाइक ट्रू। कहता है आप यहाँ करके दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या बोल रहे हो? कह रहे आप ना अगर कर दिया ना, आप कैमरे पे तो आ गए, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, बट आपका चलान होगा सिर्फ 7 दिरहम्स का, 7 दिरहम का। आई वाज लाइक 7 दिरहम, दैट्स इट। कहते नहीं जी, वो पैसे की बात ही नहीं है। 7 दिरहम आपको 7 प्रोविंसेस में जाके एक एक दिरहम पे करना है आपको, तब जाके आपके पासपोर्ट को गो हेड मिलेगा, देन ओनली यू कैन फ्लाई बैक। वाओ, आई लाइक दैट। You like that, right? It's a very good enforcer. Yeah. It's a very good enforcer. किसी ने सोचा ही नहीं यहाँ पे, किसी ने सोचा नहीं ये चीज। आप कुछ हम लोग देखो कई ना। दफा सोचते हैं ना, यहाँ पे पुणे में तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग बहुत होता है, अरे सिग्नल्स ब्रेकिंग होता है, सिविक्स तो gone down the window. अगर फाइन तगड़ी हो एंड इफ देयर इज एनफोर्समेंट enough, Have you कौन क्यों realized करेगा? there's been less amount of accident happening in Mumbai Pune Expressway now? They've completely died down. Yeah, because Thanks of the to cameras. AI, thanks to AI structure that yeah. they've built across. Yeah. It's happening. Yeah. It's happening as we मुझे speak. 2 बार चलान आ चुका है ओवर मुझे भी आ स्पीडिंग के चुका लिए, है। एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, मुझे भी आ चुका आई है। हैव टू बी कॉन्शियस नाउ। मैं तो मिडिल लेन में 80 में चलता हूँ, वो तो 100 की तक लिमिट बोलता है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे एक्साइटमेंट नहीं लेना, बिकॉज द मोमेंट आई ओवरटेक आई नेवर नो व्हाट नेक्स्ट टर्न पे कहाँ कैमरा कुछ मेरे को कैप्चर कर ले एंड दे विल मेक एन एस आउट ऑफ मी। That's the game. So okay, so yeah, on that note, Yes. let's end the conversation because this is a never-ending conversation. Yes, so many examples and stories. I'm looking can forward for come more, into and definitely, probably in the near future, probably like a couple of months from now, maybe we can meet Yeah. again and Pakka. we can discuss more in length. And, Pakka. And Thank you so much for coming Thank you on so much. Thank you, the Jay. podcast. Thank you. Thank you so much.